Assalamu alaikum everyone. How are you everyone? I hope that you all are doing well at your homes. I'm your teacher Aisha Salim and I'm here to teach you. So let's start our lecture. In today's lecture we are going to start active passive voices and I hope that you all are familiar with active passive voices because we have done active passive voices in class 6 also. So we are going to start active passive voices with indefinite tenses. As you know that in previous video we have done indefinite tenses. So today we are going to do its active passive voice. Okay, so let's start. So let's start our lecture here. This is our lecture number 2 and in this video we are only going to do active passive voice of present indefinite tense. Okay, so let's start. First of all I will tell you that what is a voice. Voice as form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि हमें बताती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई टोल्ड यू बिफोर दैट सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द सेंटेंस. ओके, एंड ये हमें इससे वॉइस से पता लगता है कि वो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड आई विल टेल यू ग्रेजुअली दैट व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिंग. एक्टिव वॉइस से हमें पता लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो एक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट डज और एक्ट्स अपॉन द वर्ब इन ईच सच सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आर सेड टू बी एक्टिव वॉइस. एंड यू कैन सी एग्जाम्पल्स हेयर. द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय, शी ईट्स chocolate. In example 1, the dog is a subject. Who is jumping onto the boy? The dog. Who is the doer of this sentence? Dog. So it is called the subject of the sentence. In example 2, she is eating. She eats chocolates. Who is eating chocolates? She is eating chocolates now. So that is why she is a subject here. Okay? And these are active sentences. Passive voice. In a passive voice sentence, the subject and object flip-flop. पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लिप फ्लॉप हो जाता है. फ्लिप फ्लॉप मीन्स दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं. ठीक है, द सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन एंड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन और इट इज पैसिव, इट इज सेड टू बी अ पैसिव वॉइस. ओके, एंड एग्जांपल्स आर हियर. द बॉय वाज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग. Okay, you can see in example 1 the boy is a subject was being jumped on the verb. ठीक है, and chocolates are eaten by her. You can see that chocolates is being eaten by her. So chocolate is a subject here, and in a passive sentence the subject has changed now. Okay, so let's start. Let's talk about the formula of active voice and passive voice sentence. Okay, you can see I have written a formula here. Active sentence formula is the subject, verb and an object. ओके, यू कैन सी दैट ये जो फॉर्मूला है यूजुअली हम सिंपल सेंटेंसेस में ये यूज़ करते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है. एंड इन पैसिव वॉइस यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड इट्स प्लेस एंड इट हैज़ बिकम here, then helping verb, third form of verb, by and subject. Okay, and the formula has flip flop now. Okay, now I will tell you 3 main rules to change an active sentence into a passive sentence, and these 3 main rules are compulsory in each tense. Okay, so here are these 3 main rules to change an active sentence into passive sentence. Number 1 is always use third form of verb. कोई भी टेंस को आपने एक्टिव में ऐसे पैसिव में चेंज करना है तो वो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे. देन इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी कंपलसरी होगा करना, और यूज़ ऑफ बाय भी कंपलसरी होगा. ये 3 मेन रूल्स ऐसे हैं जो कि एवरी टाइप ऑफ टेंस में आप एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करोगे तो आप इसने ये 3 रूल्स अप्लाई करने हैं. ओके, so now here is an example of as I told you before that we are doing only present indefinite tense today, active passives of present indefinite. So the example is of present indefinite. Okay, now Ali repairs my car. You can see repairs, so it is a present indefinite tense, and you can also see here that it is the according to the formula of active sentence SVO. S means subject, Ali is a subject here, V means verb, repair is a
verb here and car is an object here. Okay, so Ali repairs my car. You can see the sentence structure. Okay, and now we all have to change this sentence into a passive voice. Okay, and you can see the passive voice here. My car is repaired by Ali. आई हैड टोल्ड यू कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा. एंड मैंने आपको 3 मेन रूल्स भी बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ. यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था माई कार एंड नाउ माई कार इज़ द सब्जेक्ट हेयर. कार has changed its place. In the first sentence it is an object and in the second sentence it is a subject. Then is repaired. Repaired is a third form of verb. I had told you कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करनी होती है. एंड यू कैन सी हेयर दैट repaired is a third form. And I had told you also that we also have to use by. You can see by here also. And Ali. My car is repaired by Ali. In the first sentence, Ali is the subject, but in the second sentence, Ali is the object. So you can see how can we change an active sentence into a passive sentence. Now the question is कि indefinite tense को हम किस तरह से change कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या रूल है. ये 3 मेन रूल्स तो वो वाले हो गए ना जो मैंने आपको बताया, आप एवरी टेंस में यूज़ कर सकते हो. बट इन प्रेजेंट डेफिनेट को उससे किस तरह से डिफरेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ अभी. नाउ while changing a subject which is a pronoun to an object, you have to change some pronouns here. जब अगर I होगा तो वो me में change हो जाएगा, he him में change हो जाएगा, she her में change होगा, we us में होगा और they them में change हो जाएगा. Understood? So now here are finally the rules to change a present indefinite active voice sentence into a present indefinite passive voice sentence. So now here are 4 rules. 3 rules are those that I had told you before, that these are the main rules, and the 4th rule is different. Number 1 is always use third form of verb, use of by, interchange position of subject and object. These 3 rules we have discussed earlier in this video, and we are only going to talk about rule number 4. Only the change is of the helping verb. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चेंज है. हेल्पिंग वर्ब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ एम और आर यूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इज़ एम और आर यूज़ करोगे. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा, आई है अगर तो एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, ही सेल्स हिज क्लोथ्स. वो अपने कपड़े बेचता है. सो हिज क्लोथ्स आर सोल्ड बाय हिम. यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोगों ने 4 के 4 रूल्स को अप्लाई किया है. हमने थर्ड फॉर्म भी यूज़ की है, हमने बाय का यूज़ भी किया है, हमने इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी किया है, और हमने इज़ एम आर भी यूज़ किया है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट नीचे बनेगा, पैसिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट बनेगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. अंडरस्टूड? Now negative and interrogative sentence. Number 1 is he does not sell his clothes. Same example का negative मैंने बनाया है. So you can see his clothes are not sold by him. Clothes is a plural, so we have to use are here. Clothes are not sold by him. You can see हमने third form use किया, by use किया, subject object की जगह change की और helping verb लगाया. So now interrogative sentence. Does he sell his clothes? अब इसको भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. आर हिज क्लोथ सोल्ड बाय हिम. ठीक है, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की, थर्ड फॉर्म लगाई और बाय भी लगाया. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड very good. So now here is your homework. You all have to do these sentences in your copy B. Okay, now I will read these sentences for you. He opens the door. You do not write a letter. She sings a song. Does he send the letter? I draw a picture. Girls click selfie. Does he love his son? My sister does not pack the gift. So students, this was all for today. You all have to do this homework in your copy B. Okay, and I hope that you all must have understood active passive of present indefinite tenses. I will come with the next topic in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay safe at your homes.